कि what are the remedies available to the consumer. He has a grievance. What are the options available or remedy available for him to resolve the grievance? हम 7 रेमेडीज की डिस्कस करेंगे. There are 7 remedies available for the consumer. First is electricity ombudsman. So under Electricity Act 2003, there is an institution which is created within a distribution company which is called Forum for Redressal of Grievance of Consumers. So first level is, first option available to the consumer is go to the Forum for Redressal of Grievance. In case the consumer is not satisfied with whatever Forum of Redressal of Grievance is saying, then he can go to Electricity Ombudsman, first option. Second option is provided under Consumer Protection Act. So Consumer Protection Act 2019 is fully applicable for the electricity consumer. The consumer can choose whether he wants to go to Forum for Redressal of Consumer Grievance or he wants to go to Consumer Court. और अब उसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन कर दिया है. सो इफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज सुटेबल टू हिम, he can go to the consumer court and get his issues resolved. Third option available is permanent lok adalat. So under Legal Services Authorities Act, the consumer can go to permanent lok adalat and get his issues with respect to electricity resolved. Third option. अगर कोई नया कनेक्शन है and new connection he is not getting, in that case there is a special provision. और उस new connection जो के लिए स्पेशल प्रोविजन सेक्शन 43 में प्रोवाइडेड है, जहां पे whoever is the applicant, he can go directly to the commission, State Electricity Regulatory Commission के adjudicating officer के पास for new connection, only for new connection. So this is a special right which has been provided with respect to new connections. Next is, in case electrocution का मैटर है, in that case National Human Rights Commission the person can go. Right to life is also one of the fundamental rights. और अगर कोई किसी का इलेक्ट्रिक्यूशन से डेथ हो रहा है, in that case directly he can go to National Human Rights Commission or State Human Rights Commission and seek remedy कि भाई मेरे जो अर्निंग मेंबर है, he has died because of electrocution, and then he will get a compensation, and that is also interim compensation. तो पांचवा है ये interim compensation का. Suit for declaration and injunction is not barred under the Electricity Act. तो आप सिविल प्रोसीजर कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन भी फाइल कर सकते हो. और 8th रेमेडी है, 7th रेमेडी है आर्बिट्रेशन. अगर किसी भी एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन प्रोवाइडेड है, जहां पे कई बार ये लिखा रहता है कि भाई जनरल मैनेजर ऑफ द डिस्कॉम विल बी आर्बिट्रेटर, सोल आर्बिट्रेटर, और कोई भी प्रोविजन है, you can go to that arbitration proceedings also. So 7 remedies are available to consumers with respect to electricity, resolving electricity dispute. First is Forum for Redressal of Consumer Grievance, appeal to Electricity Ombudsman. Number 2, Consumer Protection Act में consumer courts में जा सकता है. Third is permanent लोक अदालत में जा सकता है बंदा. With permanent लोक अदालत is constituted under Electricity Legal Services Authorities Act 1987. Fourth is अगर new connection है तो adjudicating officer के पास जा सकता है under section 43, मतलब कमीशन के पास जा सकता है डायरेक्टली इन केस ऑफ ओनली न्यू कनेक्शंस. फिफ्थ है, इन केस देयर इज इलेक्ट्रिक्यूशन, देन यू गो टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स, लाइफ एंड लिबर्टी हैज बीन टेकन अप. सिक्स्थ, nobody is barring from filing suit for declaration of injunction under CPC. फाइनल इज आर्बिट्रेशन का अगर प्रोविजन एप्लीकेबल है, अगर कोई एग्रीमेंट है, देन यू कैन गो टू आर्बिट्रेशन ऑल्सो. तो 7 रेमेडीज आर अवेलेबल. यू हैव टू चूज, अ कंज्यूमर हैज टू चूज which is the appropriate remedy and then move forward.